So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है f is a function defined from a set a to b where a is 1 2 3 4 5 and b is 6 7 8. So इस फंक्शन से इस फंक्शन तक इस सेट से इस सेट के बीच में a function is defined and you are asked to find the number of one functions, the number of onto functions, and the third question is number of functions g of x such that g of I is less than or equal to g of j if I less than j. So अगर I less than j है तो g of I less than or equal to g of j होना चाहिए. The other way of saying that function is increasing function. ठीक है? Argument छोटा है तो उसका functional value भी छोटा होना चाहिए. This is the basic definition of increasing function. So आप counting करना है number of one functions, number of onto functions and number of increasing functions. ये basic PNC का question है. Permutations and combinations का question. So first let us try to analyze one functions. So इसमें the first set you have 5 elements and in the second set you have 3 elements. ठीक है? F is a function defined from A to B. Now आपको number of one functions चाहिए. One functions का मतलब क्या है? Different elements should have different images. An element and a next element or two different elements should not have a same image. सही? So इसमें क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट को आप अलग अलग इमेजेस देना पड़ेगा. So मान लीजिए 1 का कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है? मान लीजिए 1 का इमेज 7. Now 2 का इमेज जो है 7 नहीं हो सकता है. It has to be something other than 7. So मान लीजिए 2 का इमेज 8 होगा. Now the image of 3 cannot be 1 of 7 and 8. तो 3 का इमेज कुछ और होना चाहिए. मान लीजिए 3 का इमेज 6. अब 4 का इमेज क्या करेंगे? So 4, if it has to have an image, it has to be 1 of 6, 7 and 8. 6, 7, 8 में कुछ ना कुछ होना पड़ेगा. क्योंकि कोडोमेन में there are only 3 elements. So 4 का कोई भी इमेज देने के लिए कोशिश करिए, ये तीनों में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको. इसका मतलब क्या है? इमेज जो है वो रिपीट हो रहे हैं. Can you see this? So 1 and 4 का सेम इमेज आ गया. So इसका मतलब क्या है? अगर कोडोमेन में डोमेन से कम एलिमेंट्स है तो आपको one फंक्शन हो नहीं सकता है. समझ रहे? If the number of elements in codomain is less than number of elements in domain, one functions are not possible. One functions are not possible. ठीक है? So the answer of the number of one functions will be 0. There won't be any one functions possible. ऐसे देखा तो if you have m elements in the first set and n elements in the second set, the number of one functions from A to B is nothing but npm. ये फॉर्मूला है. ठीक है? npm. ठीक है? So इसका मतलब है first element can go to any one of these n elements. Second element के लिए n-1 ऑप्शंस आएगा. Third element के लिए n-2 ऑप्शंस आएगा. So n into n-1 into n-2 so on. आप m टर्म्स तक कर सकते हैं. It's nothing but npm. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई किया तो 3p5 आएगा, which you know that is not defined. So 3p5 हो नहीं सकते. Next, let us look at onto functions. So onto functions में क्या होना चाहिए? None of the elements in the codomain have to be left out. This is similar to something like this. I have to distribute 5 sweets among 3 students such that no student is empty-handed. So is the question same? 5 different sweets, 3 different students. I have to distribute these 5 sweets to these 3 students so that no student is empty-handed. So this is a basic question of inclusion-exclusion principle. Inclusion-exclusion principle. So, what is the answer? First, total number of ways of distributing. So, first sweet को हम 3 तरीके से distribute कर सकते हैं. Second sweet को भी 3 तरीके से distribute कर सकते हैं. Third sweet को 3 तरीके से distribute कर सकते हैं. So, we have a total of 3^5 ways of distributing the sweets among these 6 students. These are the total ways.
हमारा कंडीशन अभी तक अप्लाई नहीं किया, इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस द नंबर ऑफ डेज इन विच एनी वन ऑफ द स्टूडेंट इज एम्प्टी, इट इज ये 3 स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट एम्प्टी हो सकते हैं 3C1 रेस इनटू मान लीजिए 6 एम्प्टी हो गए। अब ये 5 स्पीड को बाकी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सो एक स्पीड के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, सो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 is 2 power 5, बट जितना माइनस करना उससे ज्यादा माइनस करेंगे हम, सो इसका प्लस करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ ऑप्शंस वेयर 2 students are empty, so any 2 students can be selected in 3C2 ways into मान लीजिए 2 लोग empty handed है, so बाकी स्पीड सारे एक ही स्टूडेंट को जाएगा, that is 1 power 5, so the answer is 3 power 5 minus 3C1 into 2 power 5 plus 3C2 into 1 power 5, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में 0 power 5 आ जाएगा, we won't get any number, that is equal to 3 power 5 is 243 minus 3 into 32 plus 3, that is equal to 243 plus 3, 246 minus 96, that is equal to 150. So you can have a total of 150 different onto functions. ठीक है, 1 functions तो 0 है, onto functions are 150. So आपको थर्ड पार्ट में दिया है g is a function from b to a, g is a function from b to a and g should be a non-decreasing function, ठीक है। so b का मतलब है 6, 7, 8 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 तक function define हो रहे हैं। g is a function defined from b to a and this function has to be a non-decreasing function, ठीक है, or just simply an increasing function. So इस type of questions के लिए there is a nice logic which you can apply. So if you have to construct a non-decreasing function from b to a, ठीक है, आप effectively क्या करना पड़ेगा, देखिए। so मान लीजिए यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स को यहाँ 5 एलिमेंट्स में किसी ना किसी को आपको देना पड़ेगा। फंक्शन का मीनिंग क्या है, you have to map 6 to some element, 7 to some element and 8 to some element. इसका मतलब यहाँ 3 एलिमेंट्स को यहाँ 5 खाली मान लीजिए, let us assume that these are boxes, ठीक है, let us assume that these are boxes. ये 3 एलिमेंट्स को ये 5 बॉक्स में कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, that is the meaning of just a function, ठीक है। अब हमको एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सो लॉजिक देखिए, व्हाट आई से इज वी हैव a freedom to only select the number of elements that each box gets. We won't have the freedom to select which elements the box gets. एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट्स, इस 3 एलिमेंट्स में यह डब्बे में डालना है। सो मैं बोल रहा हूं अगर फर्स्ट डब्बे में मुझे 2 एलिमेंट्स डालना है एंड तीसरे डब्बे में 1 एलिमेंट डालना है, डाल सकते हैं। इसका मतलब इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट बॉक्स इज 2, सेकंड बॉक्स इज 0, थर्ड बॉक्स इज 1, फोर्थ बॉक्स इज 0, फिफ्थ बॉक्स इज 0। मान लीजिए ऑप्शन कंसिडर कर लीजिए। अब मैं कौन सा एलिमेंट्स इसमें डाल सकता हूं, देखिए उसमें आपको फ्रीडम है। वंस यू डिसाइड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ईच बॉक्स शुड गेट, इसके बाद उसमें कौन सा एलिमेंट जाएगा वो डिसाइड करने के लिए आपके पास फ्रीडम है या नहीं, ये बात में आप ध्यान दे दीजिए। सो मान लीजिए इसमें आप जो मैं बोल रहा हूं इसमें 6 और 7 ही जाना पड़ेगा एंड इसमें 8 जाना ही पड़ेगा इफ दिस टाइप ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट गोज इन द बॉक्स हैव टू बी सैटिस्फाइड, बिकॉज आपको इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। सो अगर इस फर्स्ट बॉक्स में आप 6 को दिया, अगर मान लीजिए 7 को दिया नहीं, सो मान लीजिए 8 को दिया, इसमें 7 कहा जाएगा, 7 थर्ड बॉक्स में चले जाएगा। दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है एक ऑर्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है। 6 इसमें गया, 7 इसमें ही जाना पड़ेगा। 7 कैन नॉट गो टू दिस बिकॉज इफ 7 गोज टू दिस 8 हैज टू गो टू 1 विच इज नॉट इंक्रीजिंग। इसका मतलब है जो एलिमेंट्स बॉक्स में जाना है उसका ऑर्डर इज ऑलरेडी डिसाइड।
order in which the elements have to go. Order in which the elements have to go is pre-decided. Order in which the elements have to go is pre-decided. Once you select the number of elements that can go into the basket, आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा. ये समझ रहे? अगर आप डिसाइड करते हैं इसमें मैं 0 एलिमेंट देता हूं, इसको मैं 0 एलिमेंट देता हूं, इसको 3 एलिमेंट देता हूं, इसको 0 0 देता हूं. So there is only one way in which you can construct a function. That is all 3 elements have to go here. अगर आप डिसाइड करते हैं 1 1 1 0 0, so आपको ऑर्डर क्या जाना पड़ेगा? 6 has to go into the first basket, 7 has to go to the second basket, 8 has to go into the third basket. So आप ये लॉजिक समझना पड़ेगा. इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए स्पेशली ये लॉजिक काम करेगा. So if you have to construct a function, you just need to decide how many elements you are going to give to each element in the codon. ठीक है, just number of elements को decide करना पड़ेगा. So does this question remind you of Beggar's problem? So आप सोचा था Beggar's problem में भी वही करते हैं. So let us take 3 रोटियां हैं, 3 रोटियां 5 beggars को आप बांटना है. These are 3 identical. These are 3 identical rotis. You have to distribute them within 5 beggars, where empty beggars are allowed. ठीक है, this is nothing but the number. Just आप number को decide कर सकते हैं. So or this can also be thought of as the number of solutions to x1, the number of elements that are given to the first box plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 is equal to 3 होना चाहिए. इसका मतलब the number of elements that this element gets, 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 दोनों को ये सबको ऐड किया तो आपको 3 आना चाहिए. ठीक है, empty box are allowed. So इस इक्वेशन का number of non-negative integral solutions फॉर्मूला आपको पता है, n plus r minus 1c r minus 1 that is equal to 3 plus 5 minus 1c 5 minus 1 that is 7c4 that is equal to 35. So 35 is the number of increasing functions that can be constructed from b to e. अगर यही क्वेश्चन आप a to b करना चाह रहे हैं, आप सेम लॉजिक अप्लाई कर लीजिए, आपको 21 आंसर आएगा. You can check at your own leisure. Thank you.